another video. आज हम डिस्कस कर रहे हैं about lumbar plexus in a very simplified form. So first, we need to understand what is lumbar plexus. So lumbar means the lumbar vertebrae from L1 to L5, and plexus means the network or web. So it is the connection of different spinal nerves from the lumbar section, and combinedly they called as a lumbar plexus. So lumbar plexus को समझने से पहले we need to understand about the spinal cord. कहाँ से कौन सी रूट्स निकलती हैं एंड उनका सिग्निफिकेंस क्या है. सो दिस इज अ कटआउट ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड. सेम यहाँ पे भी होगा. सो दिस पार्ट, लेट मी मार्क इट. सो दिस इज द डॉर्सल पार्ट और द डॉर्सल कॉलम, एंड दिस इज द ventral column. This part is the ventral column and this is the dorsal column. So यहां से एक डॉर्सल रूट निकल रही है एंड सेम यहां से एक वेंट्रल रूट निकल रही है. सो वेंट्रल मीन्स द एंटीरियर पार्ट एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट. जब ये दोनों एक जंक्शन पे मीट करते हैं, सो दे मेक spinal nerve. So this is the spinal nerve, the combination of the dorsal column and the anterior column or the ventral column. Again यहां से दो रूट्स निकलती हैं. So this is the dorsal rami and this part is the ventral rami or the anterior rami. अगेन एंटीरियर रेमाई से भी दो पार्ट्स निकलते हैं, एक पोस्टीरियर डिवीजन और एक एंटीरियर डिवीजन. सो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जितने भी लंबर प्लेक्सस से स्पाइनल रूट्स निकलेंगे जो हम डिस्कस करेंगे लंबर प्लेक्सस में, दे ऑल विल बी कमिंग फ्रॉम द वेंट्रल पार्ट, द वेंट्रल रेमाई, दिस पार्ट. इसमें डॉर्सल रेमाई का कोई रोल नहीं है. डॉर्सल पार्ट सप्लाइज टू द स्किन और द सेंसेशन, while this part, the ventral part, goes to the muscles. So let us now draw the lumbar plexus. इस पिक्चर को हम साइड कर लेते हैं. So first you need to mark the lumbar area L1, L2, L3, L4 and L5. Again I am repeating कि ये जो स्पाइनल रूट्स हैं जो लंबर प्लेक्सस में इंक्लूड होती हैं, they all will be coming from the anterior rami, जैसा कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पे एंटीरियर रेमाई से, और देन वहां पे एक एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन होता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. सो आई विल बी मार्किंग द पोस्टीरियर डिवीजन विद द रेड कलर and the anterior division with the blue color. So first let us start from the L1. Posterior branch है, the posterior division coming from the L1 like this, and ये दो branches देगा जिसमें पहला है ilio hypo gastric and second है ilio inguinal. ये दो पार्ट हैं जो कि हमारे L1 से निकल रहे हैं. सो नर्व रूट वैल्यू क्या होगी? L1 फॉर बोथ ऑफ देम बिकॉज L1 से स्ट्रेट आ रहे हैं. देन हम अगेन एक लाइन ड्रॉ करेंगे रेड से, पोस्टीरियर डिवीजन, एंड L1 and L2 combined they will give a nerve that is genitofemoral. So ये L2 and L1 से आ रही है, so we can write down nerve root value is L1 and L2. Simple. Now
this L2 will go like this and combine with the L3 and L4. And this is known as obturator nerve. ही आपको याद रखना है कि दिस इज अ पोस्टीरियर डिवीजन, बिकॉज हम इसे रेड कलर से बना रहे हैं. सो ये पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द एंटीरियर रेमाई से निकल रहे हैं, ऑब्ट्यूरेटर नर्व. सो इसकी नर्व रूट वैल्यू क्या होगी? सिंपल, कमिंग फ्रॉम L2, L3 and L4. So we can write down L2, L3 and L4. This is the obturator nerve. Next, L4 and L5. This will make your lumbosacral trunk. This part we will discuss in some other video. This is your lumbosacral trunk. So now let us draw the anterior division with blue color. So anterior division will start from your L2, this dotted line. Again another branch coming from L3, and again another branch L4. So L2, L3 and L4 will give you femoral nerve, and we can write down the nerve root value, that is same as L2, L3 and L4, same as the obturator, but the difference is femoral nerve is the anterior division and obturator nerve is the posterior division. So next we will draw another anterior division with blue line that will be coming from the L2 and L3. So combinedly L2 and L3 will make your lateral cutaneous nerve of thigh. So if this is your thigh region, so the lateral part will be supplied by this nerve. The femoral nerve will supply the anterior compartment. As you can see, this is the anterior portion. We are looking at the lower extremity. So the femoral nerve will supply the anterior part of the thigh. So this is your lumbar plexus. For further division, we can now talk about the sciatic nerve. So this femoral nerve will supply your four quadricep muscles, that is vastus medialis, vastus lateralis, rectus femoris and vastus intermedius. These are the four muscles that will be supplied by the femoral nerve. Again, this femoral nerve is the anterior division. Now on the posterior division, you can say the hamstring part. So this hamstring part is supplied by your sciatic nerve. So sciatic nerve supplies the posterior compartment of the thigh. And again, this sciatic nerve will divide into two parts at the location of knee joint. So knee joint से ये दो अलग हिस्सों में बढ़ जाएगी. And anteriorly, जब हम बात करते हैं anterior division की and posterior division की, so anterior division में this will form your common peroneal nerve that supplies your anterior compartment of leg below
the knee part. And posterior में जो हम बात करते हैं तो posterior part will give you another nerve, that is your tibial nerve. So this tibial nerve will supply the posterior compartment of your leg. So this is your posterior compartment of the leg will be supplied by your tibial nerve, and the anterior compartment of the leg will be supplied by the common peroneal nerve, this area, the anterior compartment of the lower extremity below the knee area. So this is the knee area, and below this, the sciatic nerve divides into two parts. One goes as tibial nerve and another goes as your common peroneal nerve. So let's clear this diagram from here. So let us talk about the obturator, that obturator nerve. Obturator nerve will also give two divisions. One is anterior compartment and another is posterior compartment. So on the anterior side, this will supply adductor magnus, adductor longus and adductor brevis. और posterior compartment में this will supply your obturator externus. So ये है obturator nerve का division in anterior part and the posterior part. And as we have discussed, the femoral nerve will supply your quadricep muscles. Quadricep muscles that are vastus medialis, vastus lateralis, vastus intermedius and rectus femoris. These four muscles will be supplied by your femoral nerve. And if you'll talk about the hams group, so ये group supply करेगा via sciatic nerve, and that sciatic nerve will go to the knee and divide into another two parts, that is common peroneal nerve and one is tibial nerve. So this is your entire lumbar plexus. Thank you.